हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे 10 इम्पोर्टेंट कमिटीज़ के बारे में जो आप सब लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कुछ काम आएगा। पहले नंबर पे है, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी वाज constituted by Government of India on 16 January 1957 to examine the working of the Community Development Program 2nd October 1952 and the National Extension Service 2nd October 1953. The committee submitted its report on 24th November 1957 and recommended the establishment of scheme democratic decentralization. उसके बाद आता है सरकारिया कमीशन। सरकारिया कमीशन basically started for the to overview the central and state relations. It was set up in 1983 by Central Government of India, and it was to examine the central state relationship on various portfolios and suggest changes in the frameworks of the relations. उसके बाद आता है शिवरमन कमिटी। शिवरमन कमिटी was responsible for the establishment of NABARD. The committee was formed on 30 March 1979 under the chairmanship of V. Sivaraman. V. Sivaraman एक सिविल सर्वेंट थे, आप उनके बारे में विकिपीडिया में पढ़ सकते हैं। उसके बाद आता है लोढ़ा कमिटी। लोढ़ा कमिटी was for reforms for cricket in India. It was set up by the Supreme Court of India on 22nd January 2015 to analyze and recommend implementable actions for improving the BCCI. उसके बाद आता है चक्रवर्ती कमीशन। चक्रवर्ती कमीशन was related to monetary policy. The Sukhomoy Chakraborty Committee was formed in December 1982 under the chairmanship of Professor Sukhomoy Chakraborty to assess the functioning of the Indian monetary system. Its goal was to improve monetary regulation. A feat that was hoped would be enable price stability. उसके बाद आता है केवी कामत कमिटी setting parameters for loan restructuring. It was set up in 4th September 2020 and KV Kamath was the chairman of this committee and it was set up by Reserve Bank of India. उसके बाद आता है नरसिम्हन कमिटी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और नरसिम्हन कमिटी वाज रिलेटेड फॉर बैंकिंग रिफॉर्म्स। द फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया set up various committees with tasks of analyzing India's banking sector and recommending legislation and regulations to make it more effective and competitive and efficient. नरसिम्हन कमेटी, उसके बारे में भी आप लोग डिटेल में पढ़ सकते हैं। उसके बाद आता है रंगराजन कमेटी। रंगराजन कमेटी वाज सेट अप फॉर पब्लिक सेक्टर डिसइन्वेस्टमेंट एंड कंप्यूटराइजेशन ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री. It was set up in 1983 under the chairmanship of Dr. C. Rangarajan. He was then Deputy Governor of Reserve Bank of India, and it looked into the modalities of drawing a phase plan of mechanization in the banking industry. उसके बाद आता है सुरेश तेंदुलकर कमिटी। It was related for the methodology of the poverty estimation. It was set up in 2005 with Tendulkar as a chairman to report on methodology of estimation of poverty. उसके बाद आता है राधाकृष्णन कमिटी। डॉक्टर एस राधाकृष्णन आप सब लोग जानते ही हैं। दिस कमिटी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एंड इट वाज अपॉइंटेड इन 1948. सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।